Namaste. Welcome to Devbhoomi Uttarakhand. Discover with us the Rupkund Trek. Anem a començar el trekking de Rupkund, situat als Himalaies d'Uttarakhand, Índia. Ens acompanyes? We kicked off our trek in the village of Wan, right by Latu Devata temple. After 2 kilometers, we couldn't resist a pit stop at Daba in Rankadar for some much-needed breakfast. And by the way, since it's the same route as the Ali Bendi Bugyal trek, we got to see some mules hauling all sorts of gear. Talk about bismuth. A short 1 kilometer and a half later, we hit the Nilganga river. The water is so pure, we just had to drink straight from the stream. Who needs bottles when nature is serving up fresh and clean water? Then we hike up to Geroli Patal, where we found a cozy camping spot, a dhaba for lunch, and of course, water to keep the adventure going. With our bellies full and backpacks weighing us down with 25 kg of gear, tents, food, crampons, winter clothing, we trek on through a forest bursting with pink burans, rhododendrons. A pro tip is local folks made the best flower juice here. Totally worth the taste. We took a quick detour to a Shiva and Devi temple just before reaching our final stop, with the jaw-dropping views of the Bramtal mountains. Finalment hem arribat a Bendi Bugyal, el lloc on acamparem aquesta nit, la primera nit. Per mi és un lloc molt especial perquè sé que és un lloc que té un significat espiritual per la gent local i em fa molta il·lusió poder dormir avui aquí. Des que hem iniciat el trekking fins ara hem estat unes 5-6 hores, comptant les estones que hem passat descansant també i menjant. I ara ens toca descansar una miqueta, agafar forces per demà, que demà ens toca una caminada bastant llarga. I ara el Manu està preparant la zona on dormirem. I jo he anat a buscar punt d'aigua. Hi ha alguns riuets per aquí, doncs podrem agafar aquesta aigua per cuinar i per beure. Crec que això és tot. Amb ganes de continuar l'aventura. What are you cooking? Pulao and dahi and salad and butter. Nice and profit. Bon prophet. Good morning, Manu.
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी हम हैं बैतनी में और हम जा रहे हैं रूपकुंड ट्रैक, जो कि आज हमारा डे 2 है। और कल हम लोहाजंग से यहाँ पे आए और हम आज जाने वाले हैं बकवावासा, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर रहेगा। और अभी हम यहाँ से बर्फ़ स्टार्ट है और काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी अच्छा वेदर है आज। और सामने माउंट त्रिशूल दिख रहा है 7120 मीटर, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और सामने माउंट नंदा गुमटी और सामने नीलकंठ एंड चौखंबा एंड सामने ब्रह्मताल टॉप। Benny Bugyal is an alpine meadow located at an altitude of about 3,350 meters. At its center is Benny Kund, a small sacred lake, and it's said that its water has spiritual properties. Every 12 years, one of the most important pilgrimages in the region, the Nanda Devi Yatra, takes place here. The next one will be in August 2026. Throughout the entire trek, the spectacular views of Mount Trishul stand out. Trishul means trident in Sanskrit, the symbolic weapon of the god Shiva, and indeed, the mountain has that very shape. It is said that the lands around Mount Trishul have been used since ancient times by ascetics, sadhus, and devotees of Shiva as places for meditation, and that the energy of Shiva still permeates the region. Some traditions say that Trishul was thrust into the earth by Shiva to protect these lands from negative forces, which is why the mountain rises so imposing as a symbol of protection and spiritual strength. We stopped before Patarnachani, where there is an also camping spot, but there is no water there, so we'll have lunch here. Manu has set up a small igloo-like shelter as our kitchen, and I have been chopping the veggies. The weather is changing. The fog is rolling in, and we still have a good bit of uphill hiking ahead of us. सो गाइस अभी हम हैं कैलवा विनायक पे, क्योंकि अभी पूरा क्राउड लगा है। और आज हम जाएंगे बकवावासा, जो कि अब काफ़ी नियर है, 2-2.5 किलोमीटर। और आज हम 7-8 किलोमीटर चल गए बैतनी से बकवावासा की जर्नी के लिए। ओह, मज़ा आ रहा है ठंड का। आए Segurament ara utilitzarem el material, els crampons i piolet, i res, que fa molt fred. Hola! Hem arribat a Baqubawasa. Estic molt contenta perquè ha sigut un dia molt bonic. Hem caminat moltes hores, pocs quilòmetres, però ha sigut bastant intens perquè hi ha hagut bastanta neu i les motxilles pesaven bastant. Però segon dia complet, hem arribat aquí i demà volem fer cim al Rupkund. Llavors veurem si a les 5 del matí podem començar el trekking i si podem completar-ho en 4 dies en total. I ara doncs hem combinat una mica de dolços per recuperar energies. També hem netejat una mica aquest espai, hem col·locat bé la porta i res, això és tot. La masala que no falta, no?
मॉर्निंग। तो गाइस अभी हम हैं बकवा बासा में, तो पूरी तरफ से ढकी हुई है पूरा एरिया। और अभी हम जा रहे हैं रूपकुंड और टाइम हो गया अभी 8 बजे, जो कि अभी हम लेट जा रहे हैं क्योंकि वेदर पैक था और आज पूरा क्लाउडी है। और हम ऑल गियर के साथ रेडी हैं और हम जा रहे हैं अभी रूपकुंड। तो गाइस इस सीज़न का फर्स्ट विंटर रूपकुंड करने जा रहे हैं, तो देखिए आगे हमारी जर्नी में जुड़े रहिए। और ठंडा भी बहुत अच्छा है। With just one backpack in our shoulders, we crossed a snow-covered moraine field. Luckily, the snow conditions were perfect because the terrain is quite steep, and if the snow has been icy or too slippery, it could have been much more dangerous. What happened? Nothing. Chill. Chill. In some steeper sections, we had to use the ice axe to carve out a path, but we didn't need to use the rope. तो गाइस अभी हम हैं चिड़ियानाग पे, जो कि यहाँ से आपको रूपगंगा दिखती है, जो कि रूपकुंड से आती है। ये आपका नंदप्रयाग होते हुए नंदाकिनी में निकल जाती है। और ये पूरा रिच स्नो से पैक है और हमें इसको क्रॉस करते करते रूपकुंड जाना है। काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है, तो काफ़ी चैलेंज भी है, पर this challenge accept. After 3 hours, we reached Rupkund Lake, officially located at 5,029 meters, although our phones showed a bit less. Rupkund is known as the Mystery Lake because hundreds of human skeletons have been found around and inside it, although now they are covered by snow. So guys, finally विंटर रूपकुंड समिट, जो कि हम अभी हैं रूपकुंड लेक के सामने और इसकी हाइट है 4770 मीटर्स। और काफ़ी लेक पे थोड़ा वाटर है और फ्रिज हुआ है और वेदर भी काफ़ी क्लाउडी है और सनी भी। मज़ा आ रहा है। और आज हमारा तीसरा डे है। थर्ड डे हमने रूपकुंड समिट कर लिया लोहाजंग से। सो नाइस। और मेरे साथ है जैमा, जो कि स्पेन से है। मज़ा आ गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। These remains were originally thought to belong to a single group of pilgrims who died in a violent storm in the 9th century. But DNA and carbon dating have revealed at least 3 distinct groups of people from 2 separate events, one around 800 AD and other around 1800 AD. According to popular legend, a group of pilgrims escorting the goddess Nanda Devi was struck by a deadly hailstorm, believed to have been summoned by goddess herself, punishing them for breaking their ascetic vows. द 108 पिक को फॉलो कीजिए। और अभी हम हैं रूपकुंड पास पे और अभी हम जाने वाले हैं रूपकुंड पास जुनार गली टॉप। और हमारा एक मैसेज है कि
जितने भी लोग माउंटेन में सर्वाइवल कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो कृपया माउंटेन को क्लीन रखें। और हमारा ये मैसेज है कि माउंटेन को क्लीन माउंटेन से माउंटेन बनाए रखें। थैंक यू। भारत माता की जय। Ja hem arribat a Dinar Calipàs. Estem a 4.880 metres d'altura, això ens marca el telèfon. I estem davant de Mount Trisul, aquesta muntanya tan imponent de 7.120 metres d'alçada, però no la podem veure perquè hi ha bastanta boira, però sí que podem sentir els sons del glaciar i de les esllavissades, els desprendiments de neu que hi està. I la veritat és que hem estat aquí meditant 15-20 minuts i ara tornem a baixar. No hi ha gaire visibilitat, però estem seguint els nostres passos, així doncs esperem arribar ben aviat. Estem a Beni Bugyal. Al final, ahir a la nit vam acampar aquí. Quan vam tornar de Rupkund feia bastanta boira. El cel estava tapat, però va fer molta calor. Estava picant molt el sol. Després de dinar vam fer les motxilles, vam desfer la tenda, vam netejar-ho tot i vam decidir baixar fins aquí, on vam acampar el primer dia. Durant la baixada va estar nevant bastant. Estava com nevant però granitzant, com amb gel, i per això no vam fer cap vídeo. Se'ns va fer de nit i vam arribar al voltant de les 8 aquí, a Beni. Estem molt cansats, hem dormit i avui baixem cap a avall. हमने कल रुपकुंड समिट कर लिया है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है और काफ़ी ज़्यादा स्नो भी है। मेरा मानना ये है कि आप विंटर टाइम में रुपकुंड ट्रैक करना चाहते हो तो आप अपना ऑल इक्विपमेंट और आइसेक्स के साथ रुपकुंड जाए। विदाउट गियर के बहुत इम्पॉसिबल है। The 108 week, clean mountain, safe mountain. Thank you so much. Chill. Chill. El masala que no falti, eh? If you like our content, you can subscribe. Follow, like and subscribe. Em fa molt mal a la cara. Tinc la cara molt botiga. Crec que la muntanya m'està passant per aquí. Hello, Gemma.